Okay, Assalamu alaikum students. Let's get started with October November 2025 paper 2 variant 1 O level physics 1 hour 45 minutes का paper. Let's get started with it. ठीक है. A car is at rest on a straight horizontal road. Okay, that means the initial velocity of the car is 0. Yeah, ठीक है. At time t is equals to 0, the car begins to accelerate. Okay. Figure 1.1 shows how the momentum of the car varies with time. अच्छा जी momentum versus time का ग्राफ given है. Okay. Use figure 1.1 to determine the resultant force acting on the car during the first 1.5 seconds of its motion. अच्छा जी हमने resultant force निकालनी है during the first 1.5 seconds. That is, this is 1.5 seconds somewhere here. ठीक है. You have to calculate the resultant force. Okay. So, how will we calculate the resultant force? Can you realize this is the momentum versus time graph? बेटा the gradient of momentum versus time graph क्या होता था? Gradient is equals to change in y over change in x. What is on the y axis momentum? Gradient is equals to change in momentum over change in time. Do you remember that force या resultant force का क्या formula होता था? Change in momentum over change in time. Beta, that means the gradient of this graph that is equals to change in momentum over change in time is equals to your resultant force. Can you calculate the gradient? क्या आप gradient निकाल सकते हो इस ग्राफ का? जी बिल्कुल. If you realize you have this as your first point, this is x axis में 1.5, y axis में this is 18,000. What is another point that you have? 0, 0. Can you use these 2 points and calculate the gradient? ये दो पॉइंट्स यूज करके ग्रेडियंट निकाल सकते हो या 0, 0, 1.5, 18,000. कैन यू कैलकुलेट द ग्रेडियंट बच्चा? ग्रेडियंट किसके इक्वल हो जाएगा? y2 minus y1 over x2 minus x1. This is y2, this is x2, this is y1, this is x1. What is your value of y2? 18,000. y1 is 0. x2 क्या है? 1.5. What is x1? 0. Can you calculate the resultant force? हाँ जी बच्चों, resultant force निकाल लोगे. 18,000 divided by 1.5. बच्चों, resultant force comes out to be 12,000 Newton. You can write it here. Simple. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, the car has a mass of m when the momentum of the car is p. Its kinetic energy is ek. Okay. Show that momentum square divided by 2m is equals to your kinetic energy. कैसे करेंगे? Do you remember kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर. बेटा, क्या आपको ये भी बात याद है कि momentum is equals to mv? Let's make velocity the subject. Momentum divided by mass is equals to your velocity. Let's substitute this equation, momentum divided by mass, in place of velocity. बेटा velocity की जगह क्या substitute कर देते हैं? Momentum divided by mass. Kinetic energy is equals to half m momentum divided by mass का square. Half m momentum square divided by mass square. Mass cancel out. Kinetic energy comes out to be what? Momentum square divided by 2m is equals to your kinetic energy. आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई. Let's further move ahead. At time t is equals to 6 seconds, the kinetic energy of the car is this. अच्छा जी, 6 seconds पे आपकी kinetic energy is this. Use figure 1.1 to determine the momentum of the car at time t is equals to 6 seconds. अच्छा जी, 6 seconds पे momentum देखते हैं भाई. This is 6 seconds. इस पे momentum देखो ज़रा. The momentum at 6 seconds is this. This is what? 39,000. At 6 seconds, the momentum is 39,000. At t is equals to 6 seconds, momentum क्या है बेटा? 39,000. Okay.
and use the equation in B part 1 to determine the mass m of the car. अच्छा आपने mass m of the car determine करना है using this equation. How will you do that? Very easy. Momentum square divided by 2m is equals to your kinetic energy. बेटा आपने mass determine करना है. You have to determine this mass. Let's make this mass as the subject. Take it to the other side. Momentum square divided by 2 times of kinetic energy is equals to your mass. Momentum क्या था बेटा? 39,000 का स्क्वायर. 2 multiplied by the kinetic energy. Kinetic energy क्या है? 5.4 10 is the power of 5. 5.4 10 is the power of 5. Can anyone in the chat tell me the mass? मास निकाल सकते हो. 39,000 का स्क्वायर 5.4 10 is the power of 5 into 2. Mass comes out to be 1400 kg. 1400 kg comes out to be your mass, correct to two significant figures. बेटा अगर two significant figures तक mass लिखना है तो 1400 kg हो जाएगा. Momentum is 3900. Simple. आगे बढ़ते हैं. Let's further move ahead. अच्छा अब क्या लिखा हुआ है? In a factory, an electric motor is used to lift the boxes shown in figure 2.1. अच्छा जी फैक्ट्री में हम एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर रहे हैं to lift these boxes up. Okay. The boxes are placed in a cage and the motor winds a cable around the cylinder to lift the cage and the boxes. The total mass of the boxes is 37 kg and they are lifted vertically through a height of 13 meters. भाई height आप कितना lift कर रहे हो? 13 meters. Mass कितना है? 37 kgs. Okay. You have to calculate the total weight of the boxes. What will you do? Weight is equals to mg. बच्चे मास क्या है? 37. जी क्या लेनी है? Whenever the value of g is not provided in the question, you take g as 9.8. 37 into 9.8. Your answer comes out to be 362.6 Newton. Now I want to explain an important concept to you guys. एक बड़ा important concept आपको समझाना है. बेटा ओ लेवल फिजिक्स में आइदर आप फाइनल आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे दे सकते हो या 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे दे सकते हो. इफ आई कन्वर्ट दिस आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेटा अगर मैं इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कन्वर्ट करूं क्या हो जाएगा? यस, व्हाट विल दिस बिकम? If I keep this answer up till only the first 3 significant figures, 363 Newton. Oh, sir, why 363 Newton? Because अगर आप रियलाइज करो फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर इज ग्रेटर देन 5 तो यहाँ पे +1 हो गया. 363 comes out to be your answer, correct till 3 significant figures. और अगर आपने 2 significant figures तक आंसर रखना है, just limit your answer till 360 Newton. Simple. तो आपका ये आंसर भी करेक्ट है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. In examination, you can write your answer correct to 3 significant figures as well, 2 significant figures as well. Doesn't matter, both will be acceptable. Now you have to calculate the useful work done in lifting the box. Work done कैसे निकालते भाई? Force into the distance traveled. What is the force? What is the weight? 360 multiplied by the distance which you are traveling, 13 meters. Can you calculate the useful work done? बच्चे useful work done निकाल लोगे? Let's calculate it. This comes out to be 4,680 joules. Again, either you can give the answer to 3 significant figures या फिर अपना आंसर को आप 2 significant figures पे रख सकते हो. If you want to give the answer till 3 significant figures, 4680 joules, correct है. However, if you want to convert it to 2 significant figures, first 2 digits लिख दो. You will write 4700 joules. Sir, why have you put a 7 here? Second digit तो 6 था. बच्चे कैन यू रियलाइज दैट द थर्ड डिजिट इज ग्रेटर देन 5. यहाँ पे +1 हो गया. 4700 जूल्स इज योर आंसर टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. द EMF ऑफ द पावर सप्लाई इज दिस इज द वोल्टेज. द करंट इज दिस. ठीक हो गया. दिस इज द टाइम.
ओके, कैन यू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ट्रांसफर टू द मोटर? एनर्जी निकाल सकते हो, यस। करंट इंटू वोल्टेज इंटू टाइम। करंट की वैल्यू क्या है 5.6, वोल्टेज की वैल्यू क्या है 230, टाइम की वैल्यू क्या है 11। कैन यू कैलकुलेट द एनर्जी बेटा? 5.6 230 into 11, the energy comes out to be 14168 joules. This comes out to be your energy. अब इसको भी आप यही कर सकते हो, either give it till two significant figures या three significant figures, whatever you want to do. मैं इसको two significant figures पे रख देता हूँ। 14,000 joules comes out to be my answer. ठीक है, whatever you want to do, two significant figures, three significant figures, both are acceptable. You have to calculate percentage efficiency. एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा आपकी एनर्जी आउटपुट क्या थी? व्हाट वाज योर एनर्जी आउटपुट? दिस, द यूजफुल वर्क डन। तो हम इसको ले लेते हैं 4680। व्हाट वाज योर एनर्जी इनपुट? 14168 multiplied by 100. Can you calculate the percentage efficiency? Hmm. परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल सकते हो। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? दिस कम्स आउट टू बी 33% एज योर परसेंटेज एफिशिएंसी। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ऑनेस्टली बड़ा इजी सवाल था। ओके, लेट्स फर्दर मूव अहेड। Some of the energy transferred by the motor during the lifting process is not transferred usefully. By some of the energy is not transferred usefully. State two reasons why the efficiency of the process is less than 100%. भाई हमने बताना है why is the efficiency less than 100%, क्या कहोगे? Some energy is lost as heat. You will say energy transferred as thermal energy. You will say some energy is lost as heat. Second क्या लिखोगे? Why is the efficiency less than 100%? You will say work is done in overcoming friction or air resistance. You will say work done against friction slash air resistance. Simple. आगे बढ़ते बेटा. Now let's see this. Figure 3.1 shows a small block of ice at 0 degree centigrade and a plastic cup that contains 0.24 kg of water. अच्छा जी, ये एक प्लास्टिक कप है जिसके अंदर 0.24 kg ऑफ वाटर है। यू हैव अ आइस दैट इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। परफेक्ट। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इनिशियल टेम्परेचर है वाटर का। परफेक्ट। द ब्लॉक ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर। बेटा ये जो ब्लॉक ऑफ आइस है, ये जो ब्लॉक ऑफ आइस है इसको हमने वाटर में ड्रॉप कर दिया। परफेक्ट। ओके, describe in terms of molecules how is energy transferred by conduction. बेटा कंडक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता था? इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते थे। डू यू रिमेम्बर? कंडक्शन के प्रोसेस में क्या होता था बेटा? हॉट मॉलिक्यूल्स यूज टू कोलाइड with cold molecules transferring energy. कंडक्शन के प्रोसेस में ये होता था। हाउ इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन फ्रॉम वाटर टू आइस? व्हाट विल यू से? द वाटर मॉलिक्यूल्स that are the molecules of the hotter substance collide with the molecules of ice. As the water molecule collide with the molecules of ice, they transfer energy. लिख लो यहाँ पे। You will say water molecules collide with the molecules of ice
What will you further say? Water molecules collide with the molecules of ice. What will you further say? Transferring energy. Eventually क्या होगा? This causes the ice molecules to vibrate. This causes the ice molecules to vibrate faster. This causes the ice molecules to vibrate faster. Simple. Easy peasy, lemon squeezy. Let's further move ahead. All of the ice melts and at equilibrium the temperature of water is 6 degrees centigrade. ये आपका final temperature हो गया. This is your specific heat capacity of water. This is your mass of water. You have to calculate the energy transferred to the water. क्या कहोगे? Energy transferred Q is equals to what? Mass of water, specific heat capacity of water into change in temperature of water. Mass of water क्या है? 0.24. Specific heat capacity of water क्या है? 4200. What is the change in temperature of water? हाँ जी, change in temperature of water क्या है? This is your initial temperature. This is your final temperature. Change कितना हो गया? 22 minus 6. Can you calculate energy transferred? Hmm. Can you calculate energy transferred, beta? 0.24 4200 into 16. 4200 into 16. The energy transferred comes out to be 16128 joules. Rounded off to two significant figures. ये बन गया 16,000 joules. Let's further move ahead. Describe how the molecular structure of water at 6 degrees centigrade differs from the molecular structure of ice. बेटा हमने बताना है how does the structure of liquid differs from a structure of solid. What will happen? हाँ जी, लिक्विड का स्ट्रक्चर सॉलिड से किस तरह डिफर करता है? व्हाट विल यू से? You will say there is no regular arrangement, yeah, there is no regular repeating pattern of molecules in water at 6 degrees centigrade. बेटा liquid में आपके molecules are in no orderly arrangement. First point लिख लो. You will say in water at 6 degrees centigrade the molecules are not orderly arranged, or you can say there is no orderly arrangement. कुछ भी कह सकते हो आप. What is the second difference? What is the second difference? In liquid you have translatory motion. बेटा लिक्विड में आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन होता है. मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर ईच अदर. सॉलिड में क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन. मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. लिक्विड में क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन. मॉलिक्यूल स्लाइड ओवर ईच अदर. तो ये भी लिख लो. इन वाटर द मॉलिक्यूल्स slide over each other, performing translatory motion. Simple as that. Easy peasy, lemon squeezy. आगे बढ़ते हैं बेटा. The plastic cup contains water at 6 degree centigrade. भाई प्लास्टिक कप के अंदर वाटर है at 6 degree centigrade. अच्छा जी, ये लो जी, प्लास्टिक कप आ गया. इसमें वाटर है at 6 degree centigrade. Perfect. You have water at 6 degree centigrade. Perfect. Is left in a room where the room temperature is 22 degree centigrade. अच्छा जी, outside temperature क्या है? 22 degree centigrade.
The temperature of the water in the cup rises slowly to room temperature. अच्छा, वो क्या रहा है कि the temperature in the cup rises क्योंकि outside का temperature ज़्यादा है. Okay. When the cup at 6 degree centigrade is left in a metal cup. ओह, अच्छा, जब आप वाटर को मेटल कप में छोड़ रहे हो. अच्छा जी. The temperature of the water rises to room temperature more quickly. बेटा जब आपका ये कप जो है वो मेटल का है, this causes the temperature to rise more quickly. State why the temperature of water in the cup returns to room temperature more quickly when the cup is made from metal. बेटा अगर ये कप मेटल से बना हुआ होगा तो आपका टेम्परेचर क्विकली रूम टेम्परेचर पे क्यों राइज कर जाएगा? वाई? बिकॉज मेटल इज अ गुड थर्मल कंडक्टर एंड प्लास्टिक इज अ बैड थर्मल कंडक्टर. लिख लो. बिकॉज मेटल is a good thermal conductor and plastic is a bad thermal conductor. Simple. Let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं बेटा. हाँ जी, ये देखो. Figure 4.1 shows a ray of light striking the left hand side of a thin glass converging lens. Okay, so this is a converging lens, this is a ray of light. Okay. Explain why the ray refracts and changes direction as it enters glass. बेटा जैसे ही आप ग्लास को एंटर कर रहे हो, why does the ray refracts and changes direction? What will you say? As the ray enters glass, its speed changes. बेटा जैसे ही लाइट जो है वो ग्लास के अंदर जाती है, its speed changes. या क्या कहोगे? Its speed decreases, it travels more slowly. Okay. As it travels more slowly, what will happen? Hmm. As it travels more slowly, what will happen? It will bend or its direction will change. You will say, as light enters glass, it enters a more dense medium. As light enters the glass, it enters a more dense medium. Hence, its speed changes. This causes the light to bend. बेटा जैसे ही लाइट ग्लास में एंटर करती है, इट इज एंटरिंग अ मोर डेंस मटेरियल. एज इट एंटर्स अ मोर डेंस मटेरियल, इट स्पीड्स चेंजेस या इट ट्रैवल्स मोर स्लोली. हेंस इट बेंड्स. ठीक है. into a more dense material, hence its speed changes. या कह सकते हो hence its speed slows. This causes the light to bend. या refract कर सकते हो. Refract, bend, both are the same thing. Explain what is meant by principal focus या focal point of a lens. Focal point की क्या definition होती है? Focal point is the point where rays parallel to the principal axis meet. तो यहाँ पे लिख लो. यहाँ पे लिख लो. Rays parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, meet at the focal point after passing through the lens. बेटा rays parallel to the principal axis after passing through the lens. ठीक है. Rays parallel to the principal axis pass through the focal point
after hitting the lens या after passing through the lens. ठीक है. अच्छा, what is focal length? Focal length is the distance between optical center O and focal point capital F. फोकल लेंथ की क्या डेफिनेशन है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट. सिंपल एज दैट. आगे बढ़ते हैं. ओह, another good question. An object of height 1.8 centimeter is placed at a point 2.2 centimeter to the left of the center of the lens. Okay. Figure 4.2 is a full scale diagram that shows the converging lens, its principal axis, and its true principal focus f1 and f2. Okay. On figure 4.1, draw an arrow to represent the height and position of object O. The arrow should start on the principal axis. ठीक है भाई. Can you realize we are given that five small boxes on the x-axis represent 1 centimeter. Five small boxes on the y-axis represent 1 centimeter as well. ठीक हो गया. हमें given है the object is at a distance of 2.2 centimeter. Okay, let's count it. ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है? 2.2 सेंटीमीटर. तो 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर हो गया ये. ठीक है. 1 2 3 4 5 ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया. दिस कलेक्टिवली इज 2 सेंटीमीटर. अब 2.2 सेंटीमीटर कहाँ लाई करेगा बेटा? कैन यू हम्बली रियलाइज 5 boxes on the x-axis equal to 1 सेंटीमीटर. एक बॉक्स कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा? 0.2 सेंटीमीटर. रेशियो मेथड लगा लिया. वेयर विल 2.2 सेंटीमीटर भी? ये आ गया आपकी 2.2 सेंटीमीटर. ओके. व्हाट इज द हाइट? हाइट इज 1.8 सेंटीमीटर. ओके. 1.8 सेंटीमीटर कहाँ पे लाई करेगा? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 here. This is your object O. बेटा ऑब्जेक्ट ओ मैंने किस तरह हाईलाइट किया? हाउ डिड आई हाईलाइटेड ऑब्जेक्ट ओ? ऑब्जेक्ट ओ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.2 सेंटीमीटर एट अ हाइट ऑफ 1.8 सेंटीमीटर. तो इसको ये मार्क कर दो इस तरह. ओहो. कैन वी ड्रॉ इट करेक्टली प्लीज? वन नोट. Yeah, this is your object. Again, one node being Mastikhor, I think I will have to further reduce the. Yeah, this is your object too. Perfect. This is your object too. Okay, so we have made the object O. हम इसे label भी कर सकते हैं. हाँ, we have to label it as well. This is object O. Now, one thing right off the bat, one thing that I can see right off the bat. क्या देख सकते हो भाई? Object O, object O is placed between optical center and focal point. Optical center and focal point. Object O is placed between optical center and focal point. इसका मतलब क्या है? जब भी आपका ऑब्जेक्ट हो सेंटर ऑफ द लेंस और फोकल पॉइंट के बीच में प्लेस होगा, यू विल हैव अ वर्चुअल इमेज. दिस वाज केस नंबर 5. याद है? जब भी ऑब्जेक्ट O is placed between the optical center and the focal point, you have a virtual image. Now, I think
पार्ट टू में हमने यही करना है। ऑन फिगर 4.2 ड्रॉ two rays from the tip of the arrow drawn in C part 1 to locate the position of the tip of the image. Draw an arrow to represent the image. अच्छा जी, अब हमने इमेज बनानी है। How will we draw an image? हमेशा याद रखो, whenever you are drawing an image, आपने दो रेज लेनी है। सर कौन सी दो रेज लेनी है? whenever you are drawing the image of an object, आपने दो रेज का इस्तेमाल करना है। सर कौन सी दो रेज? The first ray should be a ray passing through the optical center like this. पहली रे आपकी ऐसी रे होनी चाहिए that passes through the optical center like this. सेकेंड रे क्या होगी? Parallel to the principal axis. सेकेंड रे क्या होगी भाई? Parallel to the principal axis like this. And the ray that is parallel to the principal axis passes through the focal point like this. बच्चों, can you realize these two rays are diverging rays? क्या आप ये रियलाइज कर सकते हो these two rays are diverging rays? जब भी हमारे पास diverging rays हुआ करती थी क्या करते थे? We used to extend them backwards इस तरह से। We used to extend them backwards. Let's do this as well. इसको भी extend करते backwards. Yeah. We extend these two rays backward, and the point where the two rays meet. बेटा जब भी दो रेज डाइवर्ज करती थी हम उन्हें एक्सटेंड करते थे बैकवर्ड टू फाइंड द इमेज। द पॉइंट वेयर द टू रेज मीट is your image I का point. Let's see whether we have to mark it with an arrow or not. देखते हैं। ड्रॉ एन एरो टू रिप्रेजेंट इमेज आई। ठीक है, एरो भी मार्क करना है तो एरो भी मार्क कर देते हैं भाई। हमें क्या, हमें तो जैसे एग्जामिनर बोलेगा वैसे हम कर देंगे भाई। ये आ गया आपका एरो इमेज आई, सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। State whether the image I of the object is a real image, virtual image. Explain your answer. क्या कहोगे? The image is virtual. Why is the image virtual? Explain भी करना है। एक तो आपने ये बता दिया कि image जो है वो virtual है, but why? Explain your answer. You will say virtual image because the object is placed between the center of the lens, that is the optical center, and the focal point. जब भी आप फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे यू विल हैव अ वर्चुअल इमेज। अब लेट्स सी दिस। Okay, so let's see this question number 5. An iron beaker containing liquid X is placed on the bench in a laboratory. Okay. Liquid X begins to evaporate slowly. भाई liquid X evaporate कर रहा है. Okay. Explain why the evaporation causes the temperature of liquid X to decrease. भाई evaporation की वजह से temperature of liquid X decrease क्यों कर रहा है? What will you say? During evaporation, molecules with greater kinetic energy, molecules with greater kinetic energy escape from the surface of the liquid.
from the surface of the liquid. बेटा इवेपोरेशन के दौरान क्या होता है? Molecules with greater kinetic energy escape from the surface of the liquid. ठीक है. Molecules with greater kinetic energy escape from the surface of the liquid. This causes the average kinetic energy of the molecules to decrease. Hence, the temperature decreases. Hence, the temperature decreases. Simple as that, nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं बेटा. The iron beaker containing liquid X is placed on an induction heater as shown in figure 5.1. अच्छा जी, आयरन बीकर को हमने प्लेस कर दिया है ऑन एन इंडक्शन हीटर एज शोन. परफेक्ट. The induction heater contains a coil of wire in which there is a high frequency alternating current. अच्छा जी, यहाँ पे इंडक्शन हीटर के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट है. The alternating current in the coil generates a current in the base of the iron beaker by electromagnetic induction. बेटा इंडक्शन हीटर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, दिस जनरेट्स अ करंट. कहाँ पे? दिस जनरेट्स एन ऑल्टरनेटिंग करंट इन द आयरन बीकर, यहाँ पे. ओके, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट्स द करंट इन द बेस ऑफ द आयरन बीकर. क्या कहेंगे? हाउ डज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट्स करंट इन द बेस ऑफ द बीकर? व्हाट विल यू से? आप कहोगे द ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ द कॉइल. बेटा ये जो कॉइल है, कौन सी कॉइल है भाई? ये वाली. दिस. The current flowing in this coil of wire generates an alternating magnetic field. This alternating magnetic field cuts with the iron, कह सकते हो आयरन का बीकर कह सकते हो. This alternating magnetic field cuts with the iron beaker, generating an alternating current or alternating EMF in the base of the beaker. So यहाँ पे लिख दो the alternating current in the coil, the alternating current in the coil of wire generates an alternating slash changing magnetic field. This magnetic field cuts with the base of the iron beaker, generating EMF. Simple. Generating EMF in the base of the container. Simple as that, nothing complicated here. आगे बढ़ते बेटा. The current in the base of the iron beaker causes the base to become hot. भाई base आपकी hot हो रही है. The temperature of the liquid at point P just above the base increases. अच्छा जी, यहाँ पे आपका टेम्परेचर पॉइंट पी पे क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है. परफेक्ट. Figure 5.2 shows the position of point P. ये point P की position आ गई. Explain in terms of particles why the density of liquid X decreases as its temperature increase.
बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? As the temperature increases, the kinetic energy of the particles of the molecules increase. As the kinetic energy of the particles या फिर molecules increase क्या होगा? The speed of molecules या particles will increase. As the speed of particles increase क्या होगा? The separation between the particles increase. Separation between the particles increase होगी तो क्या होगा? Volume of the liquid increases. हमने पढ़ा है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है डेंसिटी विल reduce. So you can write this entire thing. You will say as temperature increases, what will you say? Kinetic energy of particles increase and they start to move faster. बेटा जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है व्हाट इज हैपनिंग? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होगा दे मूव फास्टर. as they as the speed of particles increase, the separation between particles increase. As the separation between particles increase, what will happen? The volume of liquid increases. Since volume is inversely proportional to density, as volume increases, density decreases. Simple. The decrease in density of the liquid at point P causes the transfer of thermal energy throughout the liquid X. Explain how this happens. बेटा अगर आपकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है एट पॉइंट पी व्हाट विल हैपन? द लेस dense hot water will rise up. If your density of water at point P decreases, what will happen? The less dense hot water will rise up. क्या होगा? Consequently, cooler, denser water falls to the ground या sinks to the bottom. तो ये लिख लो. You can say less dense या hot, less dense water rises and cooler, denser water sinks to the ground, developing convection currents. This heats up the entire liquid. Simple. आगे बढ़ते बेटा. अच्छा. A circuit consists of a battery of EMF 9 volts, okay, a switch, a resistor, an ammeter, a 4 ohm resistor and a voltmeter, okay. State Ohm's law. Ohm's law बेटा क्या कहता था? Ohm's law क्या कहता था? Potential difference across a component is directly proportional to the current in the component, given that we are at constant temperature. लिख लो. The potential difference slash voltage is blue color looking good. I don't think this looks that cute. The voltage या potential difference
across a component is directly proportional to what is directly proportional to current across the component. Potential difference across a component is directly proportional to the current across the component. ये current across that component भी लिख सकते हो. Given that the electrical component is at constant टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर वाली बात लिखोगे तभी 2 मार्क मिलेंगे. लेट्स फर्दर मूव अहेड. रजिस्टर पी इज अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल. अच्छा जी, ये जो रजिस्टर पी है, दिस इज अ सिलेंडर ऑफ लेंथ एल मेड फ्रॉम कंडक्टिंग मॉडलिंग क्ले. फिगर 6.2 shows the resistor P. अच्छा, ये resistor P आ गया. ओके. Resistor P has a resistance of 8 ohms. Okay. The switch in the circuit is closed. Calculate the reading on the ammeter. अच्छा, जब आप स्विच को क्लोज कर रहे हो बेटा, द रजिस्टर पी हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms. दिस हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms. टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल रेजिस्टेंस इज 8 प्लस 4, दैट इज 12 ohms. ऑल्सो बच्चे, इफ यू रियलाइज द वोल्टेज इज 9, वी इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगा दो. वोल्टेज 9 है, करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस 12 है, करंट कम्स आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाय 12, दैट कम्स आउट टू बी 0.75 एम्पेयर. सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. आगे बढ़ते बेटा फर्दर. कैलकुलेट द पावर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रिकली टू रेजिस्टर पी. अच्छा जी, हमने पावर निकालनी है फॉर रेजिस्टर पी. हाउ विल वी डू दैट? पावर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? पावर इन रेजिस्टर पी इज इक्वल टू करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस ऑफ पी. करंट क्या है भाई? 0.75 स्क्वायर. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पी? 8. कैन यू कैलकुलेट द पावर? पावर निकाल सकते हो. पावर कम्स आउट टू बी 4.5 वॉट्स. सिंपल. आगे बढ़ते हैं बेटा. रेजिस्टर पी इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट. अच्छा जी, रेजिस्टर पी को हमने सर्किट से रिमूव कर दिया. The conducting modeling clay from resistor P is reshaped to make a cylindrical resistor that has the same volume. अच्छा जी, आपने सिलेंडर को रीशेप कर दिया टू हैव द सेम वॉल्यूम एज रेजिस्टर पी बट हाफ द लेंथ. ओ, दिस शोज द रीशेप्ड रेजिस्टर. Calculate the resistance of the reshaped resistor. How will you calculate the resistance of the reshaped resistor? हाँ जी, रीशेप रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू रियलाइज लेंथ आपकी हाफ हो गई. योर लेंथ हैज गॉन फ्रॉम एल टू एल ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया. वी नो. ओहो, वाई इज माई वन नोट मेकिंग वेयर्ड साइंस. हमें पता है भाई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. इफ योर लेंथ हैज बिकम हाफ, आपकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी बेटा? हाफ. रेजिस्टेंस आर से आर ओवर 2 हो जाएगी. इनिशियल रेजिस्टेंस क्या थी आपकी? व्हाट वाज द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ पी? 8 ohms. हाफ कर दो, 8 से होके ये 4 ohms हो जाएगी. बट स्टिल देर इज अ ट्विस्ट इन द टेल. बेटा अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई. द स्टोरी हैज नॉट एंडेड अभी भी. कैन यू रियलाइज द वॉल्यूम इज रिमेनिंग सेम? सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बेटा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ. ओके, अगर आप लेंथ को हाफ कर रहे हो, इफ यू आर हाफिंग द लेंथ, लेंथ आपका एल ओवर 2 हो गया.
एरिया के साथ आप क्या करोगे टू कॉज द वॉल्यूम टू रिमेन सेम? बेटा एरिया को मैं किस तरह मैनिपुलेट करूं टू कीप द वॉल्यूम सेम एज एरिया इनटू लेंथ या ए एल? देखो हो ही रहा है बेटा। चलो वापस से सुनो, सुन लो। If you realize initially you had this cylindrical putty, इसका वॉल्यूम क्या था? एरिया इंटू लेंथ। बट अब एक मसला हो रहा है। योर न्यू वॉल्यूम should also equal to area into length, but there is a problem. आपकी लेंथ हाफ हो गई है बेटा, लेंथ हाफ हो गई है। हाउ कैन यू कीप द न्यू वॉल्यूम सेम एज एरिया इंटू लेंथ? कैसे रख सकते हो न्यू वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ के इक्वल? इफ यू मल्टीप्लाई द एरिया बाय टू। बेटा अगर आप अपने एरिया को टूवाइज कर दो तो इवन इफ द लेंथ इज हाफ योर वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ए एल। बात समझ आई बेटा? क्या कर रहे हैं हम? देखो आपका इनिशियल वॉल्यूम था ए एल, ठीक है सर। जो न्यू सिलेंड्रिकल पुटी है उसमें आपकी लेंथ क्या हो गई है? हाफ। लेंथ हाफ हो गई है तो अब आप वॉल्यूम को ए एल के इक्वल कैसे करोगे? बाय मल्टीप्लाइंग द एरिया बाय टू, द वॉल्यूम अगेन कम्स आउट टू बी ए एल। नाउ इफ यू डबल द एरिया देयर इज अनदर प्रॉब्लम दैट हैपेंस। क्या हमें ये बात याद है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप एरिया को डबल कर रहे हो resistance will again half. Resistance will go from its initial value to R over 2. क्या था? 4 divided by 2. The answer comes out to be 2 ohms. Simple. इस सवाल को जरा सा वापस समझ लो बिकॉज दिस इज अ रिपीटिंग क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि लेंथ हाफ हो रही है, लेंथ हाफ होगी रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, 8 से 4 हो जाएगी। फिर हमने देखा दैट यू आर मेंटेनिंग द सेम वॉल्यूम। इफ यू आर मेंटेनिंग द सेम वॉल्यूम व्हाट डज दैट मीन? कि अगर लेंथ हाफ हो रही है एरिया डबल हो जाएगा। अगर एरिया डबल हो रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी दैट वी हैव स्टडीड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया डबल हो रहा है, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी अगेन। 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 ओम्स कम्स आउट टू बी योर आंसर। आपकी रेजिस्टेंस 2 दफ़ा हाफ हो रही है इन दिस इंटायर सिनेरियो। द फाइनल रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 2 ohm. Okay. The reshaped resistor is now connected into the circuit instead of resistor P. Calculate the new reading on the voltmeter. आपने new reading on the voltmeter निकालनी है. How will you do that? First of all, so can you realize in place of this 8 ohm resistor, now you have a 2 ohm resistor. Okay. Can you calculate the total resistance, बच्चे? 4 plus 2 that is 6 ohms. Total voltage क्या है? 9. Can you calculate the current? Yes. 9 is equals to current into total resistance that is 6. 1.5 ampere is your current. Current आ गया. You multiply the current by this resistance to get the voltmeter की reading. V is equals to IR. Current 1.5 है, resistance 4 है. This comes out to be 6 volts. Simple, easy peasy, lemon squeezy. इसको नीचे ले आओ. Let's bring it to the downside. यहाँ पे रख दिया हमने. ठीक है, 6 volts comes out to be a reading. आगे बढ़ते हैं. An insulating rod made of plastic is initially uncharged. अच्छा जी, एक insulating rod है जो initially uncharged है. Perfect. The rod is rubbed with a cloth and becomes negatively charged. आपकी rod क्या हो गई? Negatively charged. ठीक है. Explain in terms of particles what happen as the rod becomes negatively charged. भाई अगर rod negatively charged हो रही है, what is happening? बेटा if any object
gets negatively charged, either it be in chemistry or in physics, it gains electrons. जो भी कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, that becomes negatively charged. So you can say electrons move from the cloth to the rod, and the rod gains electrons, becoming negatively charged. Simple as that. Nothing complicated here. आगे बढ़ते. A light ball has a thin conducting surface. Okay. The ball is suspended from the ceiling by an insulating thread. Okay. The ball is not charged. The negatively charged rod is brought close to the ball. अच्छा ये negatively charged rod को हमने ball के close ले आए. Okay. Figure 7.1 shows that the ball experiences a force attracting it towards the negatively charged rod. ठीक है भाई बॉल के ऊपर एक फोर्स लग रही है. Explain in terms of particle how an electrical conductor differs from an electrical insulator. बेटा electrical conductor और electrical insulator एक दूसरे से कैसे differ करते हैं? You will say an electrical conductor has very electrons. Simple. इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. द कंडक्टिंग सरफेस ऑफ द बॉल कंटेन्स बोथ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स and positively charged particles. Okay. Explain what happens to the negatively charged particle and to the positively charged particle as the rod is brought close to the ball. एग्जामिनर कह रहा है कि इस बॉल में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं. व्हाट विल हैपन एज दिस नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू द बॉल. बेटा जैसे ही आप इन नेगेटिव चार्जेस वाली रॉड को बॉल के करीब लाते हो, व्हाट विल हैपन? द नेगेटिव चार्जेस will repel away, move to the right side of the ball. बेटा जैसे ही आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड सामने लाते हो, लाइक चार्जेस रिपेल या नेगेटिव चार्जेस विल रिपेल, it will move to the right side of the ball. Positive charges, on the other hand, will not move and remain on the left side. हमेशा याद रखो पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करेंगे. It will remain on the left side. Simple as that. यहाँ पे लिख लो. You will say like charges repel and the negative charges in the ball move towards the right. Like charges repel and the negative charges in the ball move towards the right. Okay. सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? हाँ जी, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? पॉजिटिव चार्जेस do not move and accumulate on the left side of the ball. Simple. अच्छा, now you have to explain why a resultant force acts on the ball towards the rod. हमने बताना है भाई कि एक resultant force क्यों act कर रही है towards the rod.
बेटा इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है. Can you realize that the positive charges are very close to the negatively charged rod? Hence, there will be a larger attractive force compared to the repulsive forces due to the two negative charges. बेटा देखो हो क्या रहा है. ये positive charges are getting attracted towards the negatively charged rod. Hence, you will have an attractive force towards the rod. And these negative charges will have a repulsive force due to the negatively charged rod. बेटा नेगेटिव चार्जेस की वजह से रिपल्सिव फोर्स आ रही है, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है. बट सिंस द पॉजिटिव चार्जेस आर क्लोजर टू द रॉड, the attractive force is greater. Hence, a resultant force towards the rod. यहाँ पे लिख लो. Since the positive charges are closer to the rod, there is a greater attractive force compared to the repulsive force. Hence, there is a resultant force towards the rod. Simple. क्या लिखा हुआ भाई? Since the positive charges are closer to the rod, there is a greater attractive force compared to the repulsive force. Hence, there is a resultant force towards the rod. ठीक है. और अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो तो ये भी लिख दो कि unlike charges always attract या generate an attractive force, and like charges always repel. सिंपल. आगे बढ़ते हैं बेटा. Okay, the nuclide notation for the radioactive isotope radon is this. ठीक है. An atom of radon decays by the emission of an alpha particle. Okay. Explain how the composition of an atom of radon 222 differs from the atom of radon 224. हमने बताना है radon 222 किस तरह differ करता है compared to radon 224. Beta, can you realize both of them are isotopes of each other? Radon 222 and radon 224 are isotopes of each other. That means they will have different number of neutrons. You can say radon 222 and radon 224 have different number of neutrons. उसके आगे आप क्या कहोगे बेटा? What will you further say? You will say radon 222 has two less neutrons compared to radon 224. अब radon 222 decays to an isotope of polonium. Okay, complete the nuclide equation. बेटा रेडॉन डिके करेगा तो एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है. अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2. सिंपल. लेट्स फर्दर मूव अहेड. आगे बढ़ते हैं. Radon 222 is used in an alpha particle scattering experiment. अच्छा जी, radon 222 alpha particle scattering experiment में यूज हो रहा है. Figure 8.1 show the beam of alpha particle from radon 222. अच्छा ये beam of alpha particle है hitting a very thin sheet of gold. Alpha particle hit कर रहे हैं a very thin sheet of gold. Okay. An alpha particle detector is moved around in the vicinity of the gold sheet. भाई alpha particle detector को हम move कर रहे हैं in the vicinity of the gold sheet.
Two positions of the detector J and K are shown. अच्छा जी, first position of the detector क्या है? Position J. Second position of the detector क्या है? Position K. Describe what is observed when the detector is at position J and when the detector is at position K. Examiner पूछ रहा है कि what will be the detection when the alpha particle detecting instrument is at position J and when it is at position K. तो बेटा अगर आप देखो पोजीशन J को, at position J the count rate will be very less. पोजीशन J पे काउंट रेट क्या होगा? वेरी लेस. ठीक है, या क्लोज टू जीरो या वेरी स्मॉल, बिकॉज वेरी स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स. यहाँ पे लिख लो द काउंट रेट इज वेरी स्मॉल. क्यों इज वेरी स्मॉल? व्हाई? बिकॉज very few alpha particles are deflected through large angles. Simple. आप पोजीशन के पे आ जाओ बेटा. पोजीशन के पे काउंटर रेट क्या होगा? वेरी हाई. पोजीशन के पे काउंटर रेट क्या होगा? वेरी हाई. सर व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज अ लार्ज number of alpha particle pass through the gold sheet undeflected. यहाँ पे लिख दो the count rate is very high as large number of alpha particles pass undeflected through the gold foil. Simple. Explain what these observations show about the structure of a gold atom. भाई हमने बताना है what these observations show about the structure of a gold atom. क्या बताओगे? The gold का atom has very large empty spaces. That's why most of the alpha particles pass through them. And the gold का atom has a very small positively charged nucleus. ये दोनों चीजें लिख लो. You will say the gold atom has large empty spaces, है ना? Gold atom has large empty spaces. Has large empty spaces as most alpha particles pass undeflected. Second चीज क्या कहोगे? The nucleus is small and positively charged. What will this do? The nucleus is small and positively charged, causing the alpha particles to deflect by large angles, causing very few alpha particles कर देते हैं, causing very few alpha particles to deflect by large angles. ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं. Let's move ahead. An object moves through space. It is a large distance from any other object. There are no external forces acting on the object. There are no external forces acting on the object. Okay.
Describe two features of the motion of the object that are consequence of Newton's first law. बेटा अगर आपके ऊपर कोई external force नहीं लग रही, what will happen? Your speed will be constant and you will be moving in a straight line. Speed is constant and the motion is in a straight line. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. Planet X and Venus are two of the planets in the solar system. भाई ये Venus और एक और planet are two of the planets in the solar system. Okay. Figure 9.1 shows the orbit of Venus and the orbit of planet X. Both orbits are approximately circular. Okay. Venus experiences an external force as it orbits the sun. Okay. Explain why a force must act on Venus to keep it following an approximately circular orbit. Examiner कह रहा है भाई Venus पे एक force क्यों लगती रहनी चाहिए to cause it to move in a circle. Because देखो बेटा अगर force नहीं लगेगी, देखो Venus पे इस तरह की एक force लग रही है towards the center like this. This force on the Venus causes the velocity of Venus to change continuously. बेटा अगर Venus पे इस तरह की inward force लग रही है, this causes the motion या the velocity of Venus to change continuously. You can write here, you can say the force on Venus causes the velocity slash direction of Venus to change continuously. Simple. State what causes this force and state the direction of this force. बेटा ये force किस वजह से आती है? Due to the gravitational field strength of sun and this force is directed towards the center of the circle. यहाँ पे लिख दो this force is caused due to the gravitational field strength of sun. What is the direction of the force? The force is directed towards the center of the circle. Simple. या center of the orbit, whatever you want to say. आगे बढ़ते हैं. कितना पेपर बाकी? Okay, दो questions are left. Okay, the average radius of the Venus is this. It takes 5,400 hours to complete one orbit. This is your time period. You have to calculate orbital speed. 2 pi r divided by capital T. What is the radius? 1.110 raised to the power of 11. कैपिटल टी टाइम पीरियड क्या है भाई? 5,400 आवर्स. एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 60. एक मिनट में कितनी सेकंड्स होते हैं? 60. व्हाट डज योर ऑर्बिटल स्पीड कम्स आउट टू बी? ऑर्बिटल स्पीड क्या आ जाती है बेटा? 3.610 raised to the power of 4 meters per second. इग्नोर माई एक्सेंट. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पेपर फिनिश हो रहा है. Planet X is closer to the Sun than Venus. State the name of planet X and state how its orbital speed around the Sun compares with the orbital speed of Venus. बेटा हमेशा याद रखो Venus से करीब एक ही planet हो सकता है. There is only one planet that is closer to the Sun compared to Venus. That is Mercury. Mercury की orbital speed क्या होगी? ज़्यादा होगी. The orbital speed of Mercury is greater and then that of Venus. Simple. This marks the end of the paper. If you have any questions, you can ask.